हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स स्ट्रेस एकेडमी। यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो आप जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। हमने वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो इसमें वेक्टर स्पेस टॉपिक इस समय चल रहा है। तो एक प्रॉब्लम है, इसको हम प्रूव करेंगे कि आर प्लस इज द वेक्टर स्पेस ऑन द डिफाइंड एडिशन ऑपरेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ओके, so let's do start doing this. Okay. So what they ask, let R plus be the set of all positive real numbers. Okay. It means we have all positive real numbers. Define the operation addition and scalar multiplication. ध्यान दीजिएगा, जो एडिशन है u plus v is defined as the ordinary multiplication. यहाँ पर u जो एडिशन ऑपरेशन है वो बेसिकली ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। इट मीन्स u इंटू वी फॉर ऑल u एंड v इन r प्लस। और जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड है वो हमारे पास u की पावर a, या यू कैन से u की एक्सपोनेंट a के फॉर्म में डिफाइंड है फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू r प्लस। एंड a इज द, यहाँ पर हम जो फील्ड ले रहे हैं वो r ले लें, मतलब r प्लस ओवर r we are uh, we are talking about. So so that r plus is a vector space over r. I okay. So ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो पावर में है। ठीक है, तो ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से डिफाइंड है, और जो आपका एडिशन है वो ऐसे डिफाइंड है। ओके, तो इसके इसके अकॉर्डिंग आर प्लस विल बी द वेक्टर स्पेस ओवर द आर। ठीक है, सो वी विल डू लाइक दैट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद। सो सबसे पहले हमें प्रूव करना है द वेक्टर स्पेस, तो वी हैव टू प्रूव योर कितनी प्रॉपर्टीज, 10 प्रॉपर्टीज है ना। फर्स्ट क्या हमें प्रूव करना होता है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट दिस आर प्लस टुगेदर विद दिस ऑपरेशन प्लस, तो यहाँ वाला प्लस है, ठीक है, इट्स फॉर्म अ अबेलियन ग्रुप। ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो अबेलियन ग्रुप के लिए लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एक्सियम या प्रॉपर्टी यू कैन से। सो here you can see clearly, if I'm just taking two elements u and v from r plus, you clearly know that u plus v is defined at u into v, and we already know that product of two real numbers या multiplication of two real number, ordinary multiplication की बात कर रहे हैं, multiplication of two real numbers is again a real number. Okay, so it means addition of two real numbers will be again a real number, so this is also belonging to, and you can clearly see u is a positive number, v is the positive number, then product of two positive real numbers is again belonging to r plus. Okay, if it is belonging to r plus, this implies the addition of two r plus u and v is again belonging to r plus. It means it is closed. Okay, this implies addition is closed. Closed. So first property for the abelian we have proved it is closed. Second one, associativity. तो associativity प्रूव करने के लिए we have three elements of r plus. So I'm just taking three elements here. Let u, v and w is belonging to r plus. These are all the member from r plus. यहाँ पर and की जगह पर just say comma. Okay, so uv from r plus, and now what we have to prove, we have to prove that a u plus v plus w is just equal to u plus v plus w.
ये हमें प्रूव करना होता है फॉर द एसोसिएटिविटी। तो यू हैव टू चेक दिस। लेट अस बिगिन विद u प्लस v प्लस w। ओके, देन u एंड v में जब एडिशन ऑपरेशन कैसे हमारा पास है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ u एंड v। यहाँ पर ऑपरेशन ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन जो है एडिशन इस तरीके से डिफाइन है दैट वी आर मल्टीप्लाइंग ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ u एंड v, एंड दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एट u द पावर a। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ऑपरेशन डिफाइंड है, इट इज एडिशन ऑपरेशन, दिस इज योर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। So you can have u into v, just multiply u with v like this and plus w। फिर हम अगर w के साथ एडिशन ऑपरेशन लगाएंगे तो you looks like this into w। Okay, now you know that the multiplication is associative, ordinary multiplication associative होता है, तो you can write like this, this is v into w। Now you just again by the definition you can write here v plus w। Okay, then again definition, this is u plus v plus w। So you can able to prove this implies u plus v plus w is just equal to u plus v plus w। ठीक है, this is for all u v and w in r plus। So it means this ऑपरेशन एडिशन इज एसोसिएटिव टू, है ना, तो दिस इंप्लाइज एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, सो two axioms is proved। Number third, existence of additive identity, existence of it means additive identity means identity with respect to the addition operation। okay, so let us see कि अब हमें देखना है कि what we believe the identity। तो if we have one element u is here and you operated e, you should go with u and e plus u। so whatever, so we have to check that e is belonging to r plus or not, है ना। ये जो e एलिमेंट निकलेगा such that it for all u in r plus it satisfied this condition, है ना। तो वो एलिमेंट e जो है that is called identity here, and this identity belongs to that set or not, that is this is the axiom name is existence of identity element। okay, so let us see कि वो एलिमेंट हमारे पास कौन सा आएगा। ठीक है, so if you are just taking here you can clearly see कि वन, इसमें अगर हम वन ऐड करें तो इट विल बी ऑपरेट लाइक दिस इज u इंटू वन, है ना। और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन वन के साथ u ही होता है। वट एवर यू जस्ट हैव वन प्लस यू, अगर हम इधर से कर दें तब भी हमारे पास सेम रहेगा। एंड क्लियरली वी नो दैट कि पॉजिटिव वन इज द पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्लियरली वी नो दैट this one is belonging to set of real number, it means additive identity exists। this implied this implies additive identity exists। okay, so this is your existence of additive identity। तो वन इज इन आर, तो यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी देखिए एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड है, बट एडिशन ऑपरेशन जो डिफाइंड है दैट इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होती है, तो यहां पर एडिशन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि zero will be the additive, you can say additive identity। no, here the additive identity will be one, because the additive identity is the element which satisfies this condition। तो only one will be the satisfy this condition ना। if one को u में multiply करोगे then you will get u। okay,
तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिटी मिलती है, और वो आइडेंटिटी उस सेट में बिलोंग करती है, दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर नहीं बिलोंग करती है तो इट मीन्स इसका मतलब है वो एग्जाम हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर हमारे पास भी वन इस आर प्लस के अंदर ना पड़ा होता, ठीक, तो हमारे पास, अगर हाँ, अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पर जीरो होती और जीरो आर प्लस के अंदर नहीं है, तो हमारे पास यहीं पे हम फेल हो जाते। फिर हमारे पास वो वेक्टर स्पेस की अदर प्रॉपर्टीज हमें देखना ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। वी आर saying here additive universe, but we will get a multiplicative universe. Okay, so additive universe is what? So if we are for you, we should have an element v such that you are adding both, you will get a identity. Okay, so whatever the order, that is also okay. So for you in R plus, should there exist V in R plus, such that if you are adding both, you will get one as a additive identity. So for every element U, there should be a V in R plus. So let us see there will be exist or not. So let we have just element U, which is from R plus, and for that we need a element which is also belonging to R plus, such that you will, so clearly because U is a non-zero number, so this implies we have 1 upon U in R plus. If U is a real number, then its reciprocal is also will be a real number if U is a non-zero number. Okay, so clearly because U taken from R plus, so U is a non-zero number, then there exists, definitely exists 1 upon U in R plus. Now, you can see clearly if you are U, if adding U and U plus 1 upon U, then you are operating here U into 1 upon U. ये क्या blank is 1 upon U, you just operating here and you will get 1 is as a identity element. Or you can just have U up 1 upon U into U, you just have 1 upon U into U and you can cancel it out, you will get 1. It is possible only when, because U is a non-zero number. Okay, so clearly you can say this implies U plus 1 upon U is just equal to 1, and this is 1 upon U plus U is just equal to 1. So here the additive inverse of U is 1 by U. Okay, reciprocal of that number. So this implies uh, additive inverse exist, and for a element U, additive inverse will be additive inverse will be 1 by. क्लियर? तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया, एंड आइडेंटिटी तो है ही था। विदाउट आइडेंटिटी वी विल नॉट टॉक अबाउट इनवर्स इनवर्स, क्योंकि हमें पास इनवर्स एलिमेंट के लिए हमें आइडेंटिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर किसी किसी ग्रुप में हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, तो हम इनवर्स का कोई मतलब नहीं, फिर इनवर्स की हम बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड आइडेंटिटी फॉर द इनवर्स। तो दो एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करें, वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट, देन वी से that first element is the inverse of the second and second is the inverse of the first. Okay, next we just have fifth element, that commutativity property.
Okay, so commutative property we have. So what we have to let two elements here, let u and v, which is from R plus. Okay, and now we start with u plus v, and let us see it is commutes or not. So clearly you have u into v, and because multiplication is commutative, तो इसको आप लिख सकते हो v into u, and now you can just write v plus u. So this implies u plus v is equals to v plus u for all u and v in R plus. So commutative property exists. So these five axioms or five properties for this R plus together with this addition operation is satisfied. So it is abelian. ओके, सो फर्स्ट जो आपका एडिशन ऑपरेशन के ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज थी वो हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, फाइव प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड. ओके, नेक्स्ट हमें पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना है. तो सेकेंड वन, दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो you can have clearly so let we have element let a is from field यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर लिया गया है, और जो u है that is from R plus, this is a positive real number. Okay. So this scalar multiplication is defined in this way, u to the power a. So you know that if u is any positive real number, so whatever a is negative, positive, zero, whatever, you will get a positive number definitely. ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगी. ठीक, अगर हमारे पास ये बेस पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, whatever, we don't have any trouble about the getting the value. This value definitely will be a positive real number. Okay, so we know clearly. So this implies scalar multiplication is closed. Okay, scalar multiplication is closed. Number third, mixed property. It means scalar multiplication and addition. Okay, so first property was what? So let we have taking two elements, u and v in R plus, and we have taking a and b, which is from R. So this is field. Here it is a field. Okay, so first property, what we have this first property. So first one is what? This is first property. So what we do with the first property, we have this is A is scalar multiplication over the addition u plus v. It is distributive or not? We have to check this. So we have two elements. Okay, this is b. सो आइए बारी बारी से ऑपरेशंस लगाते हैं. सबसे पहले हम u एंड v में ऑपरेशन लगा लेते हैं. ठीक, सो व्हाट यू विल हैव लुक्स लाइक दिस इज a, और u एंड v is operated if, so you will have multiplication of u and v. This is looks like this. Okay, अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन, you know that ना, u and plus v defined as u into v, and this scalar multiplication is defined as u to power a. तो ये चीज आपको याद रखना है कि हम किन ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं. यहाँ पर ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, ऑर्डिनरी एडिशन हमारे पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया है. मतलब ये एडिशन ऑपरेशन इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर्स. ओके, एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो रेज करता है पावर को, है ना. तो यहाँ पर u इंटू वी, एंड यू कैन जस्ट, अब हम इस a को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो it will be becomes u into v to power a. It looks like this.
है ना, और ये पावर ए है तो ये ओपन हो जाएगा, तो इट विल बी यू द पावर ए इंटू वी द पावर ए। ओके, अब इनको आप सेपरेटली लिख लीजिए। अब u की पावर a बेसिकली व्हाट इज रिटन हियर, अच्छा ये जो डॉट प्रोडक्ट है दिस इज बेसिकली ऑफ एडिशन ऑपरेशन वाला है, तो इसको लिख सकते हैं u द पावर a प्लस v द पावर a इन दिस वे। एंड नाउ क्योंकि ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है तो इसको a इंटू यू लिख सकते हो और इसको इंटू a इंटू वी लिख सकते हो। तो यू कैन क्लियरली सी दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो यू कैन हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, दिस इज a u प्लस v इज जस्ट इक्वल टू a इंटू यू प्लस का a इंटू v। क्लियर? सेकेंड वन, second one what we have two scalars a, यहाँ पर हम इनका एडिशन कर रहे हैं, दिस इज योर एडिशन ऑफ दिस टू स्केलर्स इन द फील्ड, फील्ड का जो एडिशन है यहाँ पर ये यू एंड बी का जो एडिशन है वो हमारे पे वेक्टर स्पेस वाला एडिशन है, और यहाँ पर ए प्लस बी इट मीन द फील्ड के अंदर जो एडिशन ऑपरेशन होता है उसको हमने लिया है, और इट यू यू कैन जस्ट ऑपरेटेड और यू, तो you can have simply u the power a plus b in this way. Okay, and you can just break it u the power a into u the power b. Okay, अब यहाँ पर तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लीकेशन, है ना, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर जो डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, यू कैन जस्ट हैव u the power a plus u the power b, and now you can just write here a into u plus b into। क्लियर? तो इट मीन्स जो u है दैट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फील्ड मल्टीप्लिकेशन, है ना, फील्ड के जो एलिमेंट्स है उनके बीच में जो एडिशन है उनके एडिशन एडिशन जो है फील्ड में उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो यू कैन जस्ट राइट है, तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। फिर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, इफ यू आर टेकिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फील्ड एलिमेंट, मतलब नॉट वी आर, यहाँ पर ए और बी है द फील्ड एलिमेंट, मतलब स्केलर से, तो स्केलर फील्ड के अंदर जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और रियल नंबर में अगर रियल नंबर के सेट की फील्ड की बात करें तो वहां पर ऑर्डिनरी एडिशन होता है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसको हम फील्ड जब बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर ए प्लस बी ये ऑर्डिनरी एडिशन है, दिस इज नॉट ऑन ऑफ ऑफ वेक्टर स्पेस एडिशन। ओके, लेकिन जब हम यहाँ पर तो वेक्टर्स के बीच में बात कर रहे होते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर वाला मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर a इंटू बी दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, है ना, और इसको विद विद यू। ओके, अब हमको देखना है, तो यू कैन जस्ट हैव तो ये हो जाएगा यू द पावर यू द पावर ए बी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, और इसको लिख सकते हैं यू द पावर ए और कम्यूट करके भी लिख सकते हैं यू की पावर ए एंड बी दिस वे, इफ यू वांट टू राइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ए और बी तो कम्यूट हो सकता है तो इसको लिखते हैं बी की पावर ए, ऐसे लिख सकते हैं। और यू कैन हैव ये इनसाइड इस, ये तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो इसको लिखते हैं बी यू। ओके, इन दिस वे, और इसकी पावर ए, फिर ए को हम फिर से बाहर लिख सकते हैं, तो ए इंटू बी इंटू यू, तो दिस इज आल्सो सेटिस्फाइड द एसोसिएटिव विद द स्केलर multiplication and the वेक्टर मल्टीप्लिकेशन टू। क्लियर? तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता था कि वी हैव वन विच इज फ्रॉम द फील्ड एलिमेंट, है ना, यहाँ पर आप लिखना चाहें दिस इज फॉर ऑल ए फ्रॉम आर एंड दिस इज यू एंड बी फ्रॉम आर प्लस। सिमिलरली यहाँ पर a और b इज फ्रॉम r एंड दिस इज u फ्रॉम r प्लस, वो ऑलरेडी हम ले रखे हैं बट यहाँ पर भी हम मेंशन कर सकते हैं, दिस इज a एंड b फ्रॉम r
and this is u from R plus 1 is here and u is here. ठीक है, तो you clearly have this is 1 u to power 1 and और ये हमारे पास u ही रहेगा, तो दिस इज फॉर ऑल u इन R plus and 1 is a member from R. O R. This is field. Clear? So we can be able to prove all the axioms, all the properties which necessary for the vector space. So it means this implies this R plus with respect to the field R is a vector space. अच्छा, ऑर्डिनरी एडिशन या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं बनाएगा, ठीक। तो वो जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो स्पेशली डिफाइंड है इन अदर वे। और भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं दैट फॉर्म्स वेक्टर स्पेसेस, बट ये जो हमारे पास ऑपरेशन गिवन थे इनके रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विद द ऑपरेशन with the operations addition u plus v defined at u into v, and this is a into u is equals to u to power a। ठीक है, तो ये ऑपरेशन डिफाइन है, इनके साथ में ये हमारे पास क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस पर। ठीक है, जनरली आप देखोगे तो r प्लस एक छोटा सेट है दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ r, बट if you are change the operation it is possible that also a subset will be the vector space for the superset। ओके, तो अंडरस्टूड, समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, सो आई होप कि आप कर पाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेस हम शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब स्पेसेस की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, और सब स्पेसेस के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन बनता है। तो उसकी डायमेंशन पूछ लेंगे, या कोई हमारे पास कोई सबसेट दे दिया किसी भी वेक्टर स्पेस का, वो सब स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, उसे चेक करना होता है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, एक हमने और डिटेल में इस तरीके जब आपको कोई प्रॉब्लम में डिटेल में कर लेंगे तो एक हायरार्की बन जाएगी कि हाउ वी विल प्रूव अ वेक्टर स्पेस, है ना, कैसे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस को हम प्रूव करते हैं। और सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, है ना, कौन कौन सी एक्सियम्स होती हैं वेक्टर स्पेस के लिए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।